But yeah, we are live on YouTube now. I hope I will just make sure that we are live. मेरे phone से I'll just check. But in the meanwhile, there are several reasons why I feel a lot of these newer companies, Zomato ले लो, Paytm ले लो, Nykaa, all of these are not doing very well. And for many of them, हम लोग already news में देख रहे हैं कि उसका reason क्या है. For instance, if you see Nykaa, कल ही उसमें एक ब्लॉक डील था. सो कल का ब्लॉक डील क्या था? आई थिंक 335 crore का साइज था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट अगेन, इफ सेलिंग हैपेंस लाइक दैट, अगर वैसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता रहता है बाय द एंकर इन्वेस्टर्स, बाय people who are big parties, then naturally it is very likely that we see prices going down. ये तो निफ्टी है. We'll talk about the others also in some time. बट फिलहाल हम निफ्टी में क्या देख रहे हैं? इफ आई जस्ट सॉर्ट ऑफ टेल यू कि अप अंटिल नाउ क्या देखा है हमने. वी सॉ कि 18300 के बाद उसे थोड़ा सा हेजिटेशन होने लगा. व्हाई? वी सॉ कि ये जो 18300 का लेवल था, उसे तोड़ने के बाद उसने एक बार रीटेस्ट किया, देन उसने 18400 भी रीटेस्ट किया, बट 400 प्रैक्टिकली इमीडिएटली इट रिजेक्टेड, और वहां से उसने 300 भी तोड़ा और रीटेस्ट किया, विच मीन्स कि एक बार 300 के ऊपर जाने के बाद इट स्टार्टेड फेसिंग सम हेजिटेशन एंड हर्डल्स. नाउ व्हाट वी आर सीइंग इसकी वो फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है. एंड इनफैक्ट अगर आज देखते हैं, देन आज प्राइसेस प्रैक्टिकली ओपनिंग हाई के ऊपर ही रहे हैं. सो इफ यू सी हियर, दिस वाज द ओपनिंग हाई. वी कैन सी प्रैक्टिकली प्राइसेस हैव बीन अबव द opening high throughout the day, which is 18200. This is in itself is a positive sign, क्योंकि ये बताता है कि at least prices are not really as weak as one might think they are. हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी अराउंड आफ्टर 2 o'clock 2:30 का जो एक बड़ा मूव आता है, that has happened on the upside, and we can see what has happened is कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहा था उसे एक्चुअली अपसाइड पे वो ब्रेक कर पाया है. बट द रियल प्रॉब्लम, द रियल कंसर्न in my view is actually this zone here, क्योंकि हम लोग ने देखा कि कल यहाँ पे ओपन करके यहीं से सेलिंग हुआ है, एंड नाउ प्राइसेस आर जस्ट ट्राइंग टू रीच अप टू दिस लेवल. अब यहाँ पे कैसा मूव आता है, आई थिंक दैट वुड बी द रियल sort of clue into what can happen next. So let me just make sure कि YouTube is working, chat is working, क्योंकि कभी कभी YouTube का chat काम करना बंद कर देता है. So when someone on YouTube says कि अच्छा हाँ, you didn't even talk about my question or something, that's the reason. कभी कभी YouTube just does not show me the chat. So yeah, I'm just making sure that the chat is visible. But yeah, that is what is going on with the market. So किसने पूछा था कि मार्केट कैसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है ना. लेट्स सी. मेरे हिसाब से तो सीधी बात है, प्राइसेस until they really show some major signs of weakness, I feel they are likely to trend upwards. इनफैक्ट अगर आपको याद है तो either in our Tuesday or in our Thursdays लाइव स्ट्रीम मैंने कहा था कि प्राइसेस एज ऑफ नाउ, आई फील if they don't break this level or something, I had said they are likely to retest 18120. और हम लोग ने 18120 के जस्ट आसपास से हम लोग ने एक बाउंस देखा है. ऑब्वियसली 18120 वाज नॉट हिट. इफ यू सी द लो हम लोग देख सकते हैं दैट इट वाज 18133, बट आई फील दैट इज क्लोज इनफ. और इसका रीजन क्या है? हम लोग यहाँ पे पहले से ही, एज आई सेड एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, थोड़ा सा एग्जॉस्टन देख रहे थे, और उसके बाद naturally prices will find their next major support, which happens to be here. So that is what is going on. In my view, what will be very important is कि expiry 18300 18400 ये zone के आसपास कैसे हो रही है. So let's say that if we are able to see 18300ish tomorrow, maybe हम लोग कल यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, then हम लोग, मेरे हिसाब से तो क्या होगा, whether it is holding 18300 on expiry, or if tomorrow we see a very euphoric move, maybe कल एकदम ही ऊपर चला जाता है and we are fighting for 18400, then वहां पे क्या हो रहा है, that would be the one to watch out for. Another resistance level here that we can see is this one around 18350. So देखते हैं कैसे जाता है. Now if prices fall tomorrow, अगर prices नीचे जाते हैं, then मेरे हिसाब से एक्सपायरी का जो फाइट होगा वो यहाँ पे होगा अराउंड 18120. 18200 तो ठीक है, it is an important support as we saw even today,
बट आई एम अज्यूमिंग कि अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं देन दे विल ब्रेक दिस 18200 लेवल, क्योंकि वरना फिर उसे नीचे नहीं कहते, उससे साइडवेज कहते हैं. सो दैट विल बी माय व्यू फॉर बेसिकली टुमारो एंड दिस एक्सपायरी. रीजन व्हाई आई एम सेइंग एक्सपायरी इज क्योंकि हमारा तभी भी लाइव स्ट्रीम होगा 3 बजे. This is yet to be confirmed. If I have the time, I will keep the live stream. Otherwise, I may keep it for next week. Let's see. But as of now, तो मैं रखूंगा. So yeah, this is what Nifty and Bank Nifty are looking like. Nifty is looking like right now. Let's go to Bank Nifty very quickly. Bank Nifty में हम लोग देख सकते हैं on the hourly chart again it's sort of sideways जैसा ही move हो रहा है, कुछ उतना खास नहीं बता रहा. In fact Nifty में what we saw was a retest like this, but Bank Nifty उतना नीचे भी नहीं आया है. It's sort of frozen in a way in my view. अगर हम लोग बात करते हैं 5 मिनट चार्ट की, then we can see this is where Nifty and Bank Nifty differ significantly. हम लोग ने निफ्टी में देखा था कि दिस कैंडल राइट हियर वाज अ बिट लाइक दिस, और यहां से रिकवर करके निफ्टी यहां तक आया था. बट बैंक निफ्टी में वैसा नहीं है. बैंक निफ्टी में वी आर एक्चुअली ट्रेडिंग वेल अबव येस्टरडेज हाई. इनफैक्ट आज सपोर्ट लिया था कल के हाई के आसपास और कल के प्रीवियस क्लोज के आसपास, व्हिच मींस दैट बैंक्स आर अ लिटिल बेटर relatively speaking, बट इन जनरल आई वुडंट कॉल देम वेरी बुलिश, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं काफी चॉपी मार्केट है, काफी साइडवेज मार्केट है. यू कैन सी जस्ट हाउ चॉपी दिस इज. अभी आप ही मुझे बताओ, यू नो, समवनस टेकिंग अ ट्रेड, अनलेस यू आर एबल टू कैप्चर अ मूव समवेयर हियर और यहाँ पे या किधर बेच देते हो, कहाँ पे ट्रेड करोगे और क्या ट्रेड करोगे? डू यू थिंक एनीवन विल बी एबल टू मैनेज द वॉलेटिलिटी हियर? डेफिनेटली नॉट. सो choppy turbulent times, and as they say, a calm sea never made a skilled sailor. So अगर आप वो सेंस में समझते हो, then this is actually a great time to learn, because the more awkward the price movement is, the better you sort of try to understand and adapt. So उस हिसाब से maybe this is a good time. On the daily chart also, Nifty we can see it appears to be at a good zone, 18120. प्लस अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस रखे और ड्राइंग्स हाइड कर दे, we can see it's around the 20 moving average as well. So now quickly I'll look at the chat. Market was very bullish, kind of. Yes, I would say fine, very bullish. I mean, still just trying to go up. I would say bullish, like overall in the grand scheme of things, I'd say bullish would be above here. But yeah, intraday ke sense mein, yeah, possibly. That too Nifty. Bank Nifty, I feel, was a little, or rather is a little sideways and volatile right now. Jubilant Foods is not performing very well. What could be the issue? See, when you mentioned this, na, पहली चीज मेरे को याद आई कि people are starting to eat healthier. Obviously, that is possibly not a conclusive reason for it. But when it comes to these stocks like this, you know, Domino's or Sub, several things come to mind. एक तो ये है कि we have a trend of health foods being popular. और अगर आप देखते हो, Domino's has not really done a lot in the health food department. I know it sounds a little oxymoronic when someone says कि हाँ healthy pizza खाया मैंने, but if you see, practically every other retailer has been looking at some or the other form of healthy alternative in their lineup. So Domino's में वैसा नहीं है. Maybe people are starting to see the impact of that. ये fall किसकी वजह से था, I'm not sure, because clearly this is the one that matters. If you see, up until that point though we were still roughly on a gaining trajectory. मे बी आप ये भी काउंट कर लो कि ठीक है शायद थोड़ा सा पुल बैक आया है, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स फॉलन दिस मच. But yeah, could be several reasons also. On a side note, I don't know what's happened to Domino's. The quality has gone down by a significant amount. So maybe some anchor investor thought चलो Domino's order करते, और उनको मस्त सुनना पड़ा था कि ये क्या order कर लिया. So yeah, not sure of the reason. I'm not sure if there's any news item or something. Let's see. यहाँ पे generally यहाँ पे news आता है. Slight increase in fiscal November 9th. हाँ, so ये earnings का था. फिर I don't know why this is not showing the earnings thing here, but फिर ये earnings के वजह से था. You can see this is the news item. And this is all possible in TradingView, by the way, for free. I'm not using the paid version of TradingView. TradingView में जाओ,
सिर्फ यहाँ पे ये वाला थर्ड जो ऑप्शन है, हेडलाइंस पे जाओ एंड यू विल बी एबल टू सी एवरी पर्टिनेंट हेडलाइन अबाउट द स्टॉक यू चूज. फॉर इंस्टेंस किसी ने आईसीआईसीआई पूछा था, आईसीआईसीआई में गया मैं, न्यूज पे क्लिक किया एंड आई कैन सी ऑल द रेलिवेंट न्यूज इवेंट्स फॉर आईसीआईसीआई बैंक, और कोई भी रिपोर्ट में आया था तो या यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो, मे बी इट विल हेल्प यू आउट. Mindtree, we'll talk about Mindtree in a bit. When will Bata recover? No clue. I think the best investment right now is ICICI Bank. Let's see. I mean, I don't think this is a very good place to buy ICICI Bank. Being is कि अगर आप देखते हो, yeah, sure, momentum के हिसाब से it might start to gain, because if you see roughly this zone, I believe 926 is what we have been discussing last week भी. अगर इसे तोड़ता है then हाँ, there is a chance we see it inching closer to that 1000 mark. But typically अगर हम देखें then this is not a place where I generally like to enter. I feel यहाँ पे एक अच्छा point था, again from a trader's point of view, क्योंकि हम देख रहे थे that it dipped and it sort of bounced up from the 50 MA line. देखते हैं कैसा जाता है. I do feel there is a inherent banking bias that we've seen. और typically अगर आप देखते हो ना, the theoretical definition of how these market cycles work differs to what we have seen in the past short term. क्योंकि generally जब market recover करता है, okay, when the market is recovering, पहले हम लोग banks को एकदम strong देखते हैं, फिर Nifty sort of catches up and then banks underperform. Then when we see a price fall, जब actually price गिरता है, when we see a reversal of the market, maybe bearish sentiments आ जाते हैं, Nifty, Bank Nifty both end up falling, but the recovery from here is better with banks. So अगर ऐसा होता है, right now maybe we are at this stage heading towards here, or maybe we are here at this stage heading towards a higher high, because again the signals would appear very similar in both the cases. Either way, in general banking का bias ज़्यादा है अगर हम देखते हैं तो. I'm not very sure about the YTD figures, वो भी हम देख सकते हैं in fact if you want. How much banks have performed compared to Nifty. If I do YTD and percentage, we can see Bank Nifty has done plus 20% since 1st Jan, and Nifty has done flat plus 9%. Flat near plus 9%. So yeah, you can see banks have outperformed, and that is again the trend that we were talking about with ICICI also. अगर वो same trend चलता रहता है, then yes, it's a good, possibly a good move. Otherwise, maybe just like many of the other stocks, it might just move sideways. देखते हैं. Yeah, always they have been performing very well. In fact, अगर आज की ही बात करते हैं, then here we can see for sectors we can see bank is up 0.28, and bank में भी PSU banks काफी ऊपर है. PSU banks are actually up by almost 2%. So अगर हम यहाँ पे देखते हैं, we have SBI here in the PSU banks. Of course, it's not the top gainer. We'll look at some of those in a bit. But SBI जैसे PSU banks in general अगर अच्छा कर रहे हैं, then maybe this is also a good good stock to look at. So maybe एक यहाँ पे एक level आ सकता है. And if we do see this short term level being held around 580 or so, वो एक बन सकता है. So let's see which PSU bank is actually doing well. So if I go to Bank Nifty, हम लोग देख सकते हैं Bank of Baroda, IndusInd Bank and Bandhan Bank are doing really well. And losers के अंदर we've got HDFC, Kotak and Fed. अभी HDFC Bank has a very high weightage not just in Bank Nifty but also in Nifty. So maybe अगर हम HDFC Bank देखते हैं, that might explain why Nifty has not really bounced up compared to yesterday's levels. So HDFC Bank देख लेते हैं, and we can see that in general for HDFC Bank prices are looking a little sad. Prices aren't really being able to go up. They aren't really that strong. और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, this is the reason again, prices appear to be taking support here, but they have a very strong resistance here. तो यहाँ पे एक range बन गई है. अभी अगर ये range upside पे टूटती है, maybe we see a break of this 200 MA line, because हम लोग ने यहाँ पे भी same resistance देखा था. There is a chance that we are able to see at least 1600, which is around here. So देखते हैं कैसे जाता है HDFC बैंक.
अगर हम बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस इज ट्राइंग टू गो अप फेयरली वेल, यू कैन सी हियर, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी आर सीइंग विथ निफ्टी ऑल्सो। क्योंकि निफ्टी के अंदर भी कैसा था कि प्रीवियस कैंडल जो थी, येस्टरडे की कैंडल, मंडे कैंडल, दैट वाज हियर, और हम लोग ट्रेड कर रहे थे यहाँ पे। वेरी सिमिलर हैपनिंग विद रिलायंस ऑल्सो। हम लोग देख सकते हैं दैट दिस लेवल विच इज द ओपनिंग हाई acted as a support, हम लोग देख सकते हैं lower levels were retested. So Reliance moving in line with what we are seeing on Nifty also, you can see little clearer यहाँ पे. Is L&T a good buy now? I'll take a look. Will Nifty touch 18.3K tomorrow? I feel it's likely, but देखते हैं. Global cues के हिसाब से बहुत जाता है. So if you see next day का market movement depends, but next day का market open at least would typically rely on the global cues that we see. Global cues में क्या हो सकता है? Of course, you've got US markets that are running at night. So US market कैसे shape up करते हैं उसके ऊपर से. Plus you've got SGX Nifty. SGX Nifty दिखाता है कि US मार्केट पे हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक ग्लोबल मार्केट्स पे हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. लेट्स से SGX Nifty says 18350, maybe we are likely to open within this range, around 320 to 340. This is what I have typically observed. Doesn't mean कि वो ऊपर ही रहेगा, but at least it means कि ऐसा हो सकता है कि वो वहां पर at least try करे. 19K by the end of this year, it is likely, it is, I would say it is not impossible, since I think 2 or 3% ही दूर है. Where's my calci? Price is where 18,248 है ना, so 4% दूर है. Right now Nifty is 4% away from 19,000, and if you see there's still around how many days left for, let's see how many days left for the new year. अगर देखते हैं यहाँ पे, including tomorrow, not including today, if you see there are 27 candles left. So there are 27 trading days जो बाकी है, जिसके अंदर हमें 4% का मूवमेंट करना है. अगर हम लोग सिंपल भाषा में ले कि 50% of the days prices will fall, then that means effectively if prices go up by 8% cumulatively in these 13.5 days, I know थोड़ा सा odd maths हो जाएगा, then we are likely to do well. So अगर हम करते हैं 8% in so 8% divided by 13.5, that would mean कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है we should be going up by 0.6% and this should be 13.5, और जब प्राइस नीचे जा रहा है, और रादर जब प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, तब we are assuming that it is either flat or it is not doing exceptionally poorly. So let's say we take it 0% jitna, and that we do 13.5, then this would give us around 4%. So assuming that यहाँ से हम लोग एक अच्छा linear uptrend देखे, then I would say at least 0.6 to 0.7% prices should be going up by every other day for us to reach 19K. लग तो नहीं रहा that it is very likely, but definitely not impossible. I would say अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट थोड़ा भी आ जाता है, then very likely that we'll reach. I know it is a little bit of a wordsy or two number answer, but that's just how it is. I'm walking you through my thought process. L&T देखते हैं, since that was a question, and not really a stock I'd look at right now. हम लोग देख सकते हैं, एक बात तो ये है कि it is trading around the previous high. मतलब अगर यहाँ से वो रेजिस्टेंस लेता है तो सीधा नीचे जा सकता है, और 10% जितना. If we don't see a resistance, if we see a breakout, well and good. But if you are trading a breakout, then trade a breakout. Why trade the expectations of a breakout? So yeah, not looking very pleasant. अगर अच्छा नहीं कर पाता, if we don't see it delivering, and if it is not able to hold above 2100, तो मेरे हिसाब से नीचे आ सकता है 1860 के आसपास तक. Again, as I said, around 10% जितना fall कर सकता है.
When is recession coming? Arguably, it is already here, and arguably, we are already trying to mitigate it. If you consider recession as an economic slowdown, देखते हैं, let's see. No one can say कि क्या होगा, recession कब आएगा as a certainty. In fact, even central bank chiefs, I remember reading some research कि वो लोग भी कहते हैं we can't really predict more than 2-3 quarters because interest rates are too volatile for that. एक चीज मैं कहूंगा, अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट हाइक्स को समझे टू अंडरस्टैंड रिसेशन एंड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम लोग देख सकते हैं कि अप अंटिल नाउ रेट्स वर बीइंग हाइक्ड बाय अ लॉट. करेक्ट, रेट हाइक्स वर वेरी स्ट्रांग. अब हम लोग स्लोली देख रहे हैं दैट liquidity has dried up a lot, activity has dried up a lot, housing, unemployment, they are all not really showing us very bullish signs anymore. इसी वजह से रेट्स माइट नॉट गो डाउन बट दे माइट होल्ड स्टेडी और उतना ऊपर नहीं जाएंगे. सो अगर हम लोग ये देखते हैं, देन आई फील दिस माइट जस्ट बी द स्टार्ट कि अच्छा हम we might not be in a recession but we're definitely in more cautionary economic environment जहाँ पे प्राइसेस थोड़ा स्टिम्युलेट करने के लिए अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनेंगे. सो दैट वुड बी माय व्यू. बजाज फाइनेंस देखते हैं. बजाज फाइनेंस नॉट लुकिंग वेरी प्लेजेंट. हम लोग देख सकते हैं दैट प्राइसेस हैव रिजेक्टेड दिस 6900 सपोर्ट और थोड़ा सा और नीचे गिर रहे हैं. नहीं, मूविंग एवरेज सेविंग ग्रेसेस या सो 200 MA पे है, विच मीन्स कि अगर मानते हैं कि ये 6900 के आसपास, 6900 नहीं 6700 के आसपास से ऊपर जा सकता है मे बी यहाँ पे, एंड वी डू सी एनी फॉर्म ऑफ बुलिश रिवर्सल पैटर्न हियर और एनी बुलिश फॉर्मेशन हियर, देन आई फील देयर इज अ चांस अच्छा कर सकता है. इनफैक्ट अगर यहाँ से ऊपर जाता है इट माइट जस्ट मेक फॉर अ गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड. और रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स के बारे में आपको जानना है, गो ऑन द यूट्यूब चैनल. पहले तो सब्सक्राइब कर लो. सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे इफ यू सी दीज आर सम वीडियोस बाय माय फादर. नाउ lately I have just been doing live streams, so if you go to the live tab you will see my videos, but यहाँ पे अगर जाते हो then you will be able to see my father's videos, and there are several stocks यहाँ पे. जैसे कल ही उन्होंने एक स्टॉक पिकिंग के ऊपर वीडियो डाला था, स्टॉक पिक्स के ऊपर, so do check that out. My father does not come live on YouTube or on Creator yet. Maybe in the future, I will get him to do a live stream. For now, how it works is कि मैं live stream करता हूँ और मैं videos करता हूँ when I have the time. Reason now I'm preparing for my CFA level 2, which is why मेरे videos कम हो गए हैं. But otherwise, if you see, you will see my videos there also. So yeah, I hope that helps you. IT or banking better investment? So there's a very objective way to answer that. There's a very objective way to answer that. मैं कहता हूँ कैसे. First, let's take a quick look at Nifty before it closes. 18250 पे है. We can see it's soldiered on fairly well. ये तो moving averages है. Short term moving average उतना नहीं देखता मैं. On the 5 minute and such. But हम लोग देख सकते हैं practically ये जो कल का opening high था उसकी बहुत पास आया है. And I feel that is a good sign. Now, if we do see prices even holding overnight, तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि हम लोग 18300 कल जाए. बट अगर ओवरनाइट ही कुछ हो जाता है देन नेचुरली अराउंड 18200 इश माइट बी द पाथ फॉरवर्ड. फॉर बैंक निफ्टी भी हम लोग समथिंग सिमिलर देख सकते हैं. इट्स हेल्ड ऑन फेयरली वेल आई से. So that's that. Now coming to your question of IT versus banking. So what you do is you type CNX IT, divide that by Bank Nifty. ये हमें क्या करेगा? What will we achieve here? We will be able to see how Nifty and Bank Nifty have performed on a how IT and Bank Nifty have performed on a relative basis. So मान लेते हैं मैं यहाँ पे daily chart कर रहा हूँ and I will switch it to this line chart. What this does is IT divided by Bank Nifty. So हमें पता है that if this ratio is going up,
that means ki IT should be going up more than Bank Nifty, or IT is going up and Bank Nifty is going down, or IT is staying where it is staying and Bank Nifty is going down, right? Only three things that can happen. और इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं that which is stronger. तो अगर हम उस लॉजिक से जाएं तो राइट नाउ बैंक्स अपीयर टू बी स्ट्रॉन्गर, बट क्लियरली आईटी इज गिविंग अ वेरी टफ फाइट फॉर टू बैंक्स. सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, even though supports and resistances are not very meaningful in ratio charts in my view, हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं कि अगर ये वाला जो जनरल रेशियो है वो टूटता है और ये वाला होल्ड होता है, देयर इज अ चांस कि हम लोग और ऊपर जाए. एंड व्हेन दैट हैपेंस, एट दैट टाइम आईटी विल रेन सुप्रीम. सो मेरे हिसाब से अगर ऐसा लग रहा है आईटी के अंदर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है, मे बी यू लुक एट इन्फोसिस, मे बी यू लुक एट टीसीएस, और मे बी यू लुक एट माइंडट्री एज समवन सेड इन टुडेज लाइव स्ट्रीम इटसेल्फ. सो आई फील वो टाइम्स में ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, एंट्री अच्छी मिल सकती है if you have that sectoral bias towards IT. अगर IT का sectoral bias नहीं है, then what I said does not really add much more. I would say ये levels पे they are not very attractive to me at least. So someone had asked Bata, right? Bata. I always forget to add the right Bata. Bata India. Okay. Weekly देखते हैं. नॉट लुकिंग टू बैड बट नॉट लुकिंग टू गुड ईदर. मेरे हिसाब से अगर ये वाला जो जोन बन रहा है अराउंड 1600 और सो, इफ इट्स एबल टू होल्ड 1600 1700, देयर इज अ चांस वील सी इट डूइंग वेल. अदरवाइज अगर आप देखते हो देन द ओवरऑल जनरल डायरेक्शन प्राइसेस हैव मूव्ड इज मोर अलोंग द सॉर्ट ऑफ बेरिश साइड, और ये दिस इज एक्चुअली अर्ली साइंस ऑफ अ descending triangle. So let's see how things go. Jaswant, I would recommend you watch the video that's there on the YouTube channel, because वहाँ पे वो stock picks का ही एक video है dedicated, so you'll be able to look at that and you'll be able to understand those views better. That is, however, for swing and positional trading. That is not really for investing. Investing becomes a different ball game. This is the video. 266 views अभी जो है वो वाले. Yeah. As an added this thing, अगर समझो आपको थर्सडे का लाइव स्ट्रीम अटेंड करने वाले हो and you want to check out open interest, क्यों नहीं आ रहा? Open interest NSE option chain, yeah, option chain. आप NSE option chain पे जा सकते हो and then you can just make a note of how the option chain is evolving till Thursday. जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो highest call OI किधर है? We can see highest call OI is somewhere here. No, it is here. It is at 18,300 followed by 18,400. So 18,300 and 18,400 have the highest call OIs, which means कि unlikely है कि उतना decisively ऊपर जाएगा. But अगर decisively ऊपर जाएगा तो हम लोग शॉर्ट कवरिंग जैसा एक मूवमेंट देख सकते हैं. सब्सिक्वेंटली अगर हम देखते हैं हाईएस्ट पुट हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाता है, which means right now the 18,200 zone is a good support. So like this you can try to interpret the option chain also before our Thursday stream. So yeah, I hope that will help also. And yeah, I think that's about it for today's live stream. I hope you found some good value in today's stream. And I look forward to seeing all of you all hopefully on Thursday. Thursday देखते हैं, because since I have an exam on Saturday, I might choose to just revise. But if I want a quick break, then live stream रहेगी. So yeah, I'll keep you all posted. Make sure you are following me on Creator. 91 followers. Let's make it 100 today, shall we?
And let's make sure that you're subscribed on YouTube also. We are at how many? 3150 subscribers right now. So let's make that 3200, shall we? And yeah, I'll see you all in the next one. Thank you very much. Happy trading, happy analysis, and have a great day ahead. Thanks, Gautam.